Yes, good afternoon, students, and welcome to our new chapter, that is chapter number 7, Evolution. So, dealing up with the chapter because NCERT has deduced a large number of the portions from this chapter, so nothing is left behind in the chapter. We are left over with only two or three topics. So, I'm just going to tell you all about what topics have been deleted from the chapter. Clear? So, the topics that has been deleted, I am giving it under the heading of deleted portions. Deleted portions of this chapter are: number 1, that is origin of life. Clear? Origin of life, in which Operon and Halden experiment and everything was given, Big Bang theory, everything. Then evidences for evolution, that has also been deleted. Then next is what is adaptive radiation. Adaptive radiation, that has also been deleted. And next is biological evolution. Next is mechanism of evolution. Then Hardy and Weinberg principle. Then comes origin of or evolution of human beings. Evolution of human beings or evolution of man. It is given under the heading of how man has evolved. Clear? So these are the topics that has been deducted from the chapter. Again, I am telling you all, that is origin of life. The very first topic that has been deleted from the chapter is origin of life. The second is evidences of evolution. Evidences in which both morphology, anatomy, comparative, histology, everything is given. Embryology, everything. They convergent and divergent types, everything that has been given under the heading of evidences of evolution, that has been deleted out. Then the third is adaptive radiation. In your book the topic is what is adaptive radiation, and that has also been deleted. Then talking about biological evolution, that has also been deleted. Then mechanism of evolution, how evolution has proceeded on forward, that has also been deleted. Then talking about Hardy and Weinberg principle, again it has been deleted. Then evolution of human beings, that is the last topic that has been deleted from the chapter. So all these topics, they have been deleted from the chapter, and we are just left over with only 1 and 2 topics that are to be done regarding this chapter. And I'll be completing, because nothing much is left behind in the chapter. It is only the general things that are left behind in the chapter. So we are just going to talk about those topics in general, and then I'll be discussing the question and answers with you all, and I'll be concluding the chapter in this particular video. That is also a very short video, it won't be taking much number of time. And after that I'll be in my next videos I'll be continuing up with the new chapters. Clear? That is the very next unit, that is human welfare, that is dealing up with the human welfare. Getting my words? So now the topic that I am just going to deal up with, first I would like to tell you out what is evolution and how origin of life has taken place. So I hope that you people have marked out the deleted portions. Again I would like to repeat, the deleted portions are origin of life, second is evidences for evolution, third is adaptive radiation, fourth is biological evolution, fifth is mechanism of evolution, sixth is Hardy and Weinberg principle, then seventh is evolution of man, that is evolution of human beings. Clear? So
now I'm just going to deal up with evolution. When I'm dealing up with evolution, how can we define evolution, or how can we describe evolution? So while describing evolution can be defined as slow and steady process that has been taking place over a number of years and finally leads to formation of new species. Clear? So what is evolution? How can we define evolution? Evolution can be defined as the slow and steady process that has been taking place over a couple of years, not a single 1 or 2 years or a few years, but it has been taking up over a long period of time, right, from the very ancient time, and it leads to the formation of new species. So that is what is known as evolution. And we all know that the life that has been existed, it is not it didn't existed in the present, what we see that is present in the present scenario. आज जो हम लाइफ फॉर्म्स देखते हैं वो आज से पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है. हमें और आज से जो पहले जो द प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स थे उनमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट टू से डिफरेंसेस वर प्रेजेंट. एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते रहे हैं, जैसे जैसे अडेप्टेशंस में व्हाट टू से मॉडिफिकेशंस आते रहे हैं, वेरिएशंस अकर होते रहे हैं, एंड ऑल दीज फाइनली हैव लेड टू what is known as evolution. I would have very much liked to discuss adaptive radiation, geographical isolation, natural selection, etc., etc., because these are the very causes of evolution. These are the root causes of evolution, how evolution further proceeds on. Even mutation is included in evolution. But what to say, since all these portions have been deleted from your chapter, we are not going to deal up with that. Clear? So I hope that you people must have remembered all these topics, because these were all there in the 10th standard, that is under the heading of heredity and evolution. There was a chapter known as heredity and evolution, and it was given in that particular chapter. And those students whom I have taught, I have explained everything over there in detail. Getting my words? So now we are just going to proceed on with origin of life. Clear? So how life has existed on earth. Origin of life. So there are two or three theories regarding the origin of life. So the very first theory about the origin of life is that how, not origin of life, it has been deduced from the chapter, sorry. So we are just we are not dealing up with the origin of life, we are just dealing up with the evolution of the life forms. A theory, evolution of life forms. Clear? So here there are 2 to 3 theories regarding the evolution of the life forms. And what are those these theories? The very first theory is that the organisms have evolved in the manner that we see them today. According to this theory, ये theory कहती है कि जो organisms आज जैसे नज़र आ रहे हैं, आज से पहले भी जब वो what to say existence में आए थे, तब भी वो उसी फॉर्म में हुआ करते थे. Means there has been no changes, there has been no gradual progression during the due course of evolution of these living organism. ठीक है? But this theory is not true, it has been discarded. Second जो है, it says that accordingly जैसे जैसे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स हैं that are present on this earth, वो ही सारे के सारे डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स जो हैं at that very present time they were also present over there. ठीक है? So the biodiversity
as it is present today was also present previously. Clear? Then थर्ड थ्योरी जो है, थर्ड थ्योरी कहती है कि हमारा जो लाइफ है यानी हमारी जो अर्थ है उसका वेरी जो एग्जिस्टेंस है वो 4000 ईयर्स से ज़्यादा डेट बैक नहीं है. इट इज़ नॉट मच ओल्डर देन 4000 ईयर्स. द लाइफ ऑफ द अर्थ is expected to be 4000 years. Again, all these three theories, they have been discarded until unless Charles Darwin has proved that. Clear? Charles Darwin on his voyage on the ship that is Beagle, while he was moving around different parts of the world, he noticed that various life forms, they do share certain characteristic features which are linked up with other living organisms. Means they share certain similarities with other living organism. Excuse me. So accordingly we can say that the life forms, they might have evolved gradually and successively all together. क्लियर? जब एवोल्यूशन हो रहा था तो लाइफ फॉर्म्स जो हैं ग्रेजुअली और सक्सेसिवली एक दूसरे के साथ में इवॉल्व हो रहे थे. इसीलिए ये जो वेरिड लिविंग लाइफ फॉर्म्स हैं जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमें नज़र आते हैं, ये एक कॉमन एंसेस्ट्रल लीनिएज को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं. ठीक है? इसी वजह से इनमें जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो है नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इवॉल्व हुई है. लेकिन फिर भी दे आर ऑल शेयरिंग अप सर्टेन extent of common ancestral lineage. Getting my words? इस बात को जो है प्रूव करते हैं एल्फ्रेड वॉलेस. अकॉर्डिंग टू हिम what चार्ल्स डार्विन हैज सेड was true. अगेन डार्विन ने एक और थ्योरी दी थी, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में उसने रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पर जोर नहीं दिया. उसने ये कहा कि दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर एबल टू सर्वाइव इन द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, clear, they are going to produce a large number of the progenies which are going to rule up the world. Getting my words? That was the theory of Charles Darwin according for survival of the fittest. So यहाँ पर ये जितनी भी theories आई हैं, ठीक है, all these theories they are explaining how life has gradually evolved on this planet Earth. Getting my words? Then last एक टॉपिक, इसके बाद वाले सारे टॉपिक्स आपके कट हुए हुए हैं. दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें से ये टॉपिक कट है आपका. क्लियर? दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स. व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी आपके इसमें से डिलीटेड है. क्लियर? देन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये भी डिलीटेड है. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डिलीटेड. एंड हार्डियन-वेनबर्ग प्रिंसिपल, दैट हैज़ ऑल्सो बीन डिलीटेड. फिर लास्ट आता है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. A brief account of evolution, ये शो करता है कि कैसे evolution has taken place. So I always narrate a story that how life has originated from the non-life forms. Clear? Life जो है, living organisms जो है, हम इसको हमेशा organic world के रूप में शो करते हैं. So हम हमेशा ये कहते हैं that the life it has originated or the organic world it has originated from the inorganic forms. जब अर्थ जो है इट वॉज कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस एट दैट वेरी टाइम, वॉट वॉज हैपनिंग कि जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे दे वर बीइंग फॉर्म्ड एट दैट वेरी टाइम. क्लियर? फिर धीरे धीरे इन सभी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. क्लियर? धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्होंने सबने एक दूसरे के साथ में एग्रीगेट करना स्टार्ट किया एंड ड्यूरिंग दैट एग्रीगेशन दे हैव फॉर्म सर्टन एग्रीगेशंस और ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स which were known as coacervates. क्लियर? एंड लेटर ऑन जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते रहे, सो देयर अराउज अ नीड कि अब इन कोआसर्वेट्स के चारों तरफ जो है एक एक मेम्ब्रेन, एक बाउंड्री सी प्रेजेंट होनी चाहिए जो क्या करे कि इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर सके या आइसोलेट कर सके. ठीक है? तो इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने हैं वहीं से एक बायो मेम्ब्रेन डेवलप की गई जो कि उन जो एग्रीगेशन है
मॉलिक्यूल्स की उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है और यहीं से शुरुआत होती है आपके फर्स्ट सेल की, दैट वाज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में और ज़्यादा चेंजेस आते गए, देन व्हाट हैपेंड के फर्दर what to say division of labor was required so that each and every function could be performed very very specifically। ठीक है, सो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हुआ एंड उसी के लिए सेल ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो जो मेम्ब्रेन बनी थी, बायो मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल, ठीक है, इट व्हाट टू से इंट्रूडेड इनसाइड एंड उसने वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म करना स्टार्ट किया जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया एंड ईच सेल ऑर्गेनेल वाज असाइन्ड अ वेरी पर्टिकुलर फंक्शन फॉर बीइंग परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, लेटर ऑन जो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स बने, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और इन सब के रेगुलेशन को चेकआउट करने के लिए एक मास्टर ऑर्गेनेल की आवश्यकता पड़ी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्लियर, यहीं पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बना एंड इन सब चीजों की फॉर्मेशन के साथ में इवॉल्व हुआ आपका फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है इनऑर्गेनिक फॉर्म से स्टार्ट हुई, इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म से क्वासर्वेट से प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल। ये एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसीजर होता गया। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स के बाद में अलग अलग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है इसकी वेरिड ब्रांचेस होती गई एंड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने वेरिड फॉर्म्स एक्वायर कर लिए। ठीक है, जैसे ये यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स से फिर मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स बने, फिर उन मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स में से फिर रिक्वायरमेंट होने लगी कि नाउ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स बने। लेकिन उनमें से कुछ जो हैं अभी भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट रह गए, कुछ जो हैं अभी भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट रह गए, कुछ जो हैं अभी भी मल्टीसेल्युलर फॉर्म्स ही रह गए। ठीक है, और कुछ ने आगे की ओर प्रोसीड ऑन किया। गेटिंग माई वर्ड्स? सो इस तरह से ये जो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसीजर है, तो ये ब्रांचिंग आउट होती गई और ये ब्रांचिंग आउट होने के साथ साथ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन भी हुआ और कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग, जैसे वो प्रीवियसली बने थे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। गेटिंग माई वर्ड्स? इसी तरह से आपका जो लीनिएज है it was diversified into the animal world and the plant world। और धीरे धीरे जो है, जैसे कि हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स बने। नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहले बना आपका पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्पेटा, मोलस्का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले इवॉल्व हुआ आपका पिसिस के बाद में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। गेटिंग माई वर्ड्स? सो इस तरह से ये प्रोसीजर चला। अगर ऐसे ही हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे पहला आया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड सो ऑन। Getting my words? So this was all the gradual procedure by which evolution has taken place and that is all about what is the general account of evolution। वहाँ पर आपको डेट बाय डेट एंड ईयर बाय ईयर दिया हुआ है कि इतने मिलियन ईयर्स अगो जो है इतने इतने ये लिविंग पाए जाते थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे डायनासोर्स उस टाइम इवॉल्व हुए थे, ये सब चीज़ें। सो you just read go and read through the chapter and then you'll get to know। बिकॉज इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पोर्शंस विच वर टू बी डिस्कस्ड दे हैव बीन डिलीटेड आउट फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर व्हाट टू से चैप्टर। एंड रिगार्डिंग योर NCERT क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ज़्यादा क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं दे वर डीलिंग अप विद द टॉपिक्स दैट हैव बीन डिलीटेड। सो 1 or 2 क्वेश्चन आर देयर टू बी डिस्कस्ड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। So इसका जो आंसर है, when a bacterial population encounters a particular antibiotic, those sensitive to it die। Clear? One or few bacteria having mutation which make them resistant to the antibiotic survive। Such resistant bacteria multiply quickly। डार्विन ने भी ये बात की थी कि जो भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर लेते हैं, वो लार्ज नंबर में प्रोजनीज प्रोड्यूस करते हैं और वही प्रोजनीज जो है फिर आगे जाकर सर्वाइव करती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हुई कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थे, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति किसी बैक्टीरिया को इंटरेक्ट करवाया गया तो जो उसके प्रति सेंसिटिव थे वो तो सारे के सारे डाई ऑफ हो गए, लेकिन जो उसके अकॉर्डिंग म्यूटेट हो पाए, जो उसके प्रति रेजिस्टेंट हो पाए, वो सर्वाइव कर पाए और उन्होंने फास्ट नंबर में मल्टीप्लाई किया एंड दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनीज। क्लियर?
Then find out from the newspaper and popular science articles any new fossils discovered. So we don't have to do this question. Attempt giving a clear definition of the term species. Clear? Species is a group of living organisms having a maximum or sharing maximum amount of the similarities and similar characteristic features, and they are capable of interbreeding among themselves. So that is known as what is species is. Clear? Then attempt giving ये हो गया. Then try to trace the various components of the human evolution. ये हमें करना नहीं है because deleted portion में से है ये question. Find out through the internet and population science articles whether animals other than man has self consciousness. Of course मैन के अलावा भी बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है. ठीक है. देन what to say, list 10 modern day animals from internet link them to corresponding ancient fossils. ये आपको नहीं करना है. Then practice drawing various animals and plants. If you want to do it, you do it, otherwise just leave it out. Then describe one example of adaptive radiation. ये भी हमें नहीं करना है. Can we call human evolution as adaptive radiation? This also you don't have to do. Then using various resources such as your library or the internet and discussing with your teacher, trace the evolutionary stages of any one animal, say horse. ये भी आपको नहीं करना है. ठीक है. So most of the questions also they are deleted, and if you want to do the question answers in the book you may do, otherwise don't do, because इसमें मैं आपको वर्कशीट भी नहीं देने वाली हूँ. वर्कशीट देने के लिए कुछ खास पोर्शन हमारे पास बचा ही नहीं है. So in my next video we are just going to start up with the new chapter and the new unit that is dealing up with human welfare. Getting my words? And most probably I'll be starting up with the chapter that is chapter number 8, that is human health and diseases. ठीक है. वो उस पूरे चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं है, and I hope that we'll be enjoying the chapter. So just stay connected with me while we are dealing up with the chapter. Till then, thank you.